Hey, I'm Prashant. This series is created to welcome you into the world of some really amazing, inspiring women. Watch exclusively with me on this show, The Pretty Pep Talk with Prashant. Hello, welcome to the series, The Pretty Pep Talk with Prashant. And my today's guest is a body whisperer and sacred symbologist. Very, very interesting person to meet and very unique profile this is. And this is Kausar Sultana for you. Welcome to the show. Adab. Adab, adab. So Kausar, the first question is how you can look so innocent. I mean, you look like a freshly born baby. Your face is like that. After gone through all these years and all these years of experience, you still look so fresh. How come? यार आपने अजीब सा सवाल किया प्रशांत because I thought after everything I've gone through कहीं कुछ तो अब बदमाशी दिख के आएगी. But you're still saying I look innocent, so thank you for that. Very much, very much. And I think the face is the reflection of what you're feeling within, inside. That's true. And that comes out so beautifully from you. I mean, I have rarely seen this. Seriously. Thank you, thank you. आप innocence कह रहे हैं, I think, and you're comparing it with newborn babies. Newborn babies are just absolutely pure. I'm not saying that I'm pure, but what I'm trying to convey through my way of being is जो अंदर है वो बाहर भी है वैसे ही. Correct. So if I have been through good or if I've been through not so good experiences, it is who I am. It makes me the person that I am today. तो उसमें छुपाना क्या है? Wow. तो बस वैसे ही है. So what you're trying to say is whatever the experience, it is your experience and you have accepted it completely. Completely. So it has not made you a better person or a worse person. That way you are just there. And you are looking at this as an experience. Yes, absolutely. How beautiful is this? So if you look at all your experiences like this, after years, you will still look fresh and you will still be ready to receive more experiences, not blocking yourself. That's what you're trying to say? Not blocking it, yes. परेशान भी हूँ अगर तो हूँ, ठीक है. दिख जाएगा चेहरे पे तो दिखने दीजिए ना, क्या बात है उसमें. छुपाना नहीं है कुछ. That's what you're trying to say. So जो है वो है. So अगर हमारी पर्सनालिटी इतनी ट्रांसपेरेंट रहेगी तो वो इतने इनोसेंट भी रहेगी. हो सकती है, लेकिन आप हमारा सीक्रेट ऐसे ही सबको बता देंगे. आप मेरे ख्याल से पैदा ही हुई है कि आप अपने सीक्रेट सबके साथ शेयर करें, ये मुझे लगता है. You know, it's whether it matches or not exactly like that. लेकिन जो मेरा नाम है, पहला नाम कौसर. It's actually an Arabic name. Okay. It's pronounced as Kausar, and it is in the sacred Islamic book, the Quran, which means it is a name of a river in heaven. And ये माना जाता है कि जो लोग heaven जाते हैं, that river helps them purify themselves. Oh. तो शायद नाम का भी असर हो सकता है. Absolutely. So जब आप पैदा हुई थी, when you were born, I think your parents realized this and they named you Kausar. हो सकता है. Yes. तो बचपन में उन्हें दिख गया होगा कि चलो a baby is born who will heal the world आगे चल के. हो सकता है. आपने कभी सोचा था कि आप जाके ऐसे ये काम करोगी, हील करोगी लोगों को? I mean it's such a tough job because मैंने देखा है कौसर कि आजकल लोग बहुत परेशान हैं. There is so much of suffering all around. Everybody is in pain. तो हमारी लाइफ का मतलब क्या निकलता है? If everybody is in pain and suffering, then why so much suffering? And you are exactly doing that to heal them. तो why so much suffering? First of all, tell me what is your experience? हम लोग इतना सफर क्यों करते हैं? तो सफ़र का अगर इंग्लिश वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और उसी को अगर हम उर्दू या हिंदी में ले लें तो हम सब एक सफ़र पे हैं. We are all on a journey. Oh. And a part of the journey is experiencing difficulties, challenges. इंग्लिश में उसके कई अलग ऑप्शंस हैं. अगर आप उसको सफ़रिंग नहीं कहें, सफ़रिंग तब होती है जब हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते. इफ़ आई एम नॉट एबल टू बेयर इट और इफ़ आई एम नॉट वांटिंग टू बेयर इट, इवन इफ यू टेक अ स्मॉल example or a common example, I wouldn't call it small, but a common example as a headache. I'm suffering from headache is bardasht nahi ho raha, I'm not able to bear it. Whereas if you look at it as, okay, I have a headache, I want to do something about it, you can pop a pill, आप बाम लगा सकते हैं, आप सर पे कुछ चुन्नी बांध कर टाइट कर सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों हो रहा है सर दर्द. You know, there are different ways of dealing with it. Right. तो अगर वैसे नज़रिया रखें, if we have that kind of a way of looking at every
kind of pain, every kind of challenge that comes it, and not label it as suffering. I'm suffering in my life versus हाँ ये एक journey है, कुछ हो रहा है उसमें. हम कश्ती में भी जाते हैं तो लहरें ऊपर नीचे ले जाती हैं हमें. करेक्ट करेक्ट, हाउ ब्यूटीफुली सेड. तो एक तो हम लोगों ने ये सफ़र का ऐसा तय कर लिया था कि ये जो सफ़र है हमारी लाइफ की जर्नी बड़ी प्लेजेंट एंड बड़ी फुल ऑफ रोजेस एंड बर्ड्स ऐसे रहने वाली है. ये हमारे दिमाग में लोगों ने डाल दिया था, हो सकता है कि हमें लगता था कि संघर्ष आएंगे ही नहीं लाइफ में. यू वोंट हैव टू स्ट्रगल इन योर लाइफ. सो ये जो स्ट्रगल्स आते हैं, जो बॉडीली स्ट्रगल हो, मेंटल स्ट्रगल हो, इमोशनल स्ट्रगल हो, ये सारे स्ट्रगल्स हमको कुछ सिखा के जाते हैं, इसका मतलब है. एंड दे आर हियर टू टीच अस समथिंग, इजंट इट? या लाइक यू जस्ट सेड, सिखा के जाते हैं. तो वहाँ पे दो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट और आई वुड से की वर्ड्स यू यूज्ड, सिखाना और जब तक हम नहीं सीखे, लाइफ इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, ओके, बट टिल आई डोंट लर्न दैट लेसन इट विल नॉट गो, वो जाएगा नहीं. तो रेपिटेटिव होता है कहीं ना कहीं. आइदर सिचुएशंस रिपीट और आई एंड अप एट अ subconscious level, I'll keep on doing something. Okay, lovely. तो कोई भी अगर आप हॉबी भी ले लीजिए, करेक्ट, या कोई अगर आप मैथ का प्रॉब्लम कर रहे हैं स्कूल में, if you know, till you don't really learn how to do it, you would keep doing it over and over. टीचर हमें रिपीट कराए नहीं कराए, टीचर x नंबर ऑफ टाइम्स कराएगी. हम जितना उसमें अपना हुनर बढ़ाना चाह रहे हैं, how much I want to really master that, that depends on how much I repeat it or I practice it. तो अगर अच्छी चीज़ है तो मैं प्रैक्टिस करूँगी, अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो एक सबकॉन्शियस पैटर्न भी बन सकता है वो, where I'm repeating it over and over again. और इसका सरफेस लेवल पे ये है, कई लोग सोचते हैं पता नहीं यार मुझे ये चीज़ बार बार क्यों होती है, या ये मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे ही होता है. तो जब आपको ये एक मोमेंट के लिए भी इफ़ यू रियलाइजिंग कि ये मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, देन परहैप्स दैट्स व्हेन इट इज़ अ क्लू फॉर यू कि अच्छा यहाँ पे मुझे क्या सीखना है, व्हाट एम आई नॉट लर्निंग. ओके, ओह इंटरेस्टिंग. Yeah. सो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे बता रही थी, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि 4 बजे या 4:30 बजे अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मुझे 5 बजे तक हेडेक होना शुरू हो जाएगा. So this is all conditioning of your mind. It is not the body requirement. I don't think so. No. Correct. So this is what conditioning. As a body whisperer. Yeah. Now this is where my work comes in, Correct. right? Body whisperer is where, and we're all that. Okay. The reason why there is a title called body whisperer is your body is always whispering to you. Interesting. Are you listening? Very interesting. And we do. लेकिन हम जैसे आपको प्यास लग रही है, आपको कैसे पता चलता है? Yes, गला सूख रहा है, ये ना ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है ना? करेक्ट. और उस इंडिकेशन को हाउ क्विकली डू वी रिस्पॉन्ड? जब तक कि बहुत ज़्यादा गला नहीं सूख गया, हम पानी का ग्लास उठा के पीते नहीं हैं, right? So similarly, there are so many different indications our body is giving us all the time, right? And in my line of work, what we say is pain is a messenger. Pain is a messenger. So are you talking about physical pain? Physical pain. Okay. वैसे तो इमोशनल मेंटल भी है, बट अभी बॉडी विस्परर के अम्ब्रेला में हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिंबल्स देते रहती है, राइट? इफ यू हैव टू गो टू द लू, you have a sensation in the body. If you're hungry, or thirsty, like we just spoke about, there is an indication from a sensation from the body. A headache is a sensation. यहाँ तक कि हमारा ये भी experience रहा है मेरा, that if you're continuously getting hurt on a certain part of your body or a certain side of the body, कई लोग बोलते हैं, अरे हाँ, now that you're telling me, वेरी ऑफन बचपन से मैंने देखा है मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में मुझे कुछ ना कुछ इंजरी होते रहती है. ओके, बचपन से एक या तो फ्रैक्चर हुआ है, या शोल्डर में कुछ है, या मैं गिरती हूँ, या टेबल चलते चलते यू जस्ट बैंग योर फुट अगेंस्ट द टेबल और समथिंग लाइक दैट. एंड ऑफन टाइम इट एंड्स अप हैपनिंग ऑन माई लेफ्ट साइड. एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड. सो फॉर पीपल लाइक अस हु डू डीपर वर्क, that is an indication there's something about your past
that you're not willing to let go of, which is not allowing you to move forward. So the left side of the body, if there are any discomforts or dis-ease, we call it. We don't say disease, we say dis-ease. Okay? या मार बहुत चोट बहुत लग रही है, then there's something about your past that you're not willing to let go of. And it's similarly on the other side, which is the right side of your body. If there's something like that happening, then there is a fear in you or a resistance in you to move forward. So it's future based. It's a very generic way, but that's a starting point for us to explore further what is happening in your space. Okay, We interesting. start from there. ओके तो कौसर इसी बात पे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया अपनी बॉडी के साथ कि 20 साल पहले मुझे बहुत हेडेक रहता था तो मैं कोई मेडिसिन ले ली, टैबलेट ले ली या बाम लगा लिया, ऐसा होता था. लेकिन अभी मैंने देखा है कि सिंस 20 years आई हैवंट टेकन एनी टैबलेट फॉर इट, नॉट इवन सिंगल. सो द टेक्निक और वट एवर आई यूज दैट टाइम वॉज टू फोकस ऑन दैट पेन. जैसे ही हेडेक होने लगता था आई यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन इट और मेरा पूरा माइंड उस पर डाल देता था. तो 15-20 मिनट्स में धीरे धीरे पेन रिसीड होकर निकल जाता था और मुझे टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इज दिस अ वेरी गुड टेक्निक टू डू फॉर योर फिजिकल पेन? यू शुड वेट एंड ट्राई. So I will take you a little deeper in your own technique, Prashant, if you're okay to do that with me, right? Sure. जब आपको first experience हुआ ये चीज़ कि focus करने से आपका headache 20-25 minutes में चला गया खुद ही. करेक्ट. राइट? आपका इंटेंशन क्या था फोकस करने का? मेरा इंटेंशन ये था कि ये हेडेक किस वजह से हो रहा है. सो मे बी ओवर थिंकिंग, आई वॉज ओवर थिंकिंग दैट टाइम. कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से हेडेक, तो मैंने अपने माइंड को सिर्फ डाइवर्ट किया उसके तरफ. तो मैं मेरे थॉट से निकल गया और मेरा फोकस निकल गया मेरे हेडेक की तरफ. तो हेडेक ने सिग्नल दे दिया कि अभी ज़्यादा सोचो मत, हो सकता है कम सोचना शुरू करो. अपने आप ही हेडेक वो इंडिकेशन दे के निकल गया. ये मुझे अब हमारे कन्वर्सेशन से समझ रहा है. एग्जैक्टली. तो आपका फोकस पेन पे नहीं था, लाइक आई सेड अर्लियर, आपका फोकस पेन के मैसेज पे था कि हो क्यों रहा है. राइट? अगर हम पेन पे फोकस करेंगे तो पेन बढ़ेगा, क्योंकि फिर सोच ये रहेगी ये बढ़ रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कि जाएगा कैसे, क्या करना है, बहुत दर्द हो रहा है, वो हो जाता है. तो वहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से अगर हम ध्यान दे के पेन पे फोकस नहीं करना है, पेन क्या मैसेज दे रहा है हमको, करेक्ट, क्या कहना चाह रहे हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिड. सो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कि लोगों को अगर कोई सफरिंग हो रही है, किसी चीज़ की भी सफरिंग हो रही है, तो ये कुछ सिखा के ही जाएगा आपको. अगर मैं इस तरीके से जीता हूँ तो मुझे सफरिंग की वैसे तकलीफ नहीं होगी. सो व्हेनेवर सफरिंग इज हैपनिंग टू मी दैट डे और इन दैट सिचुएशन, आई विल फील कि फाइन, दिस इज गोइंग टू टीच मी समथिंग एंड आई विल बी अ वाइजर पर्सन, या मेरा विजडम आएगा, मुझे कुछ ना कुछ विजडम मिलेगा इससे. तो अगर ये सोच रहेगी तो मुझे सफरिंग की तकलीफ नहीं होगी. एग्जैक्टली. I'll give you an example from my life. For many years, I would say I was suffering from, and this is not physical body, it was finances, money, money related. You know, एक बैठ गया था मेरे मन में कि कितना भी कमा लूँ मैं, जो भी हो रहा है, लेकिन बचत नहीं होती है. I'm not able to save. बल्कि by the end of the month almost ख़त्म हो जाता है. यहाँ तक कि I started noticing कि quality of groceries by third week would get simpler. ये नहीं, बच्चों को मना करना, नहीं बेटा अब नहीं, अगले महीने लेंगे. यू नो, चॉकलेट्स है, चिप्स है, स्नैक्स है, बाहर का खाना लास्ट वीक ऑफ द मंथ तक तो बिल्कुल बंद. घर में सीधा साधा खाना बन रहा है. तो एक बन गया था एक पैटर्न कि बिगनिंग ऑफ द मंथ थोड़ा एंजॉय करो, मिडिल में यू नो ब्रिंग इट डाउन, बाय द एंड सिंप्लीफाई. एंड बैकग्राउंड में ये चलते ही रहता था दैट कुछ भी कर लो पैसे नहीं बचते, बहुत यू नो इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ. एंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सालों ये चलने के बाद में एक बार मैं यू नो इट्स लाइक लिटरली इट वाज अ ब्रेक डाउन. प्रशांत, आई सेड आई जस्ट स्पोक टू गॉड, यूनिवर्स, जो भी है, दैट आई हैव हैड इट विद द स्ट्रगल ऑफ मनी. आई वांट यू नो, एंड इट्स नॉट लाइक मैंने कुछ किया नहीं. आई हैव अटेंडेड कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स, यू नो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया. ठीक है. और जब बैठी मैं रियली एक बार मेडिटेशन में कि क्या है मेरे अंदर जिसमें ये जिसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है, फाइनेंशियल चैलेंजेस. कोर से मेरा ये आया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद
calculations and money and things like that. I'm not interested. My God, मुझे हिसाब नहीं रखना खुद का. same thing with me. और अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा? लोगों ने बोला था ये चीज़ मुझे कई बार, तुम डू यू कीप एन अकाउंट, यू शुड कीप एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंसेस, डू यू नो, अपने खुद के बैंक स्टेटमेंट्स नहीं खोल के देखना, टैक्सेस का कोई है ही नहीं कुछ, नहीं आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, मुझसे नहीं होता, आई एम नॉट गुड एट मैथ. एंड देन पीपल टोल्ड मी, बट जब तक आप, वही मैं कह रही हूँ ना, फ़र्क टीचिंग एंड लर्निंग में होता है. कई लोगों ने सिखाने की कोशिश की, चलो आई विल हेल्प यू विद इट, चलो आई विल मेक समथिंग फॉर यू, आई विल डू इट फॉर यू. ना, सबको कुछ ना कुछ बहाने बहुत बनाए मैंने. खुद के लिए भी टाइम टेबल बनाया, अब से मैं शुरू करूँगी, लेकिन आई वॉजंट रेडी टू लर्न इट टिल द टाइम द लेसन रिपीटिंग ऑन मी, द डिफिकल्टीज बिकेम सो मच दैट फाइनली आई सेड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस एनी मोर. और आज खुद के बिजनेस का, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ में पूरे अकाउंटिंग मेरे उस पे है. मेरी बड़ी बेटी का जो काम चलता है उसकी अकाउंटिंग भी आई एम हैंडलिंग. तो किधर से किधर खुद का भी करना है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अगेन फॉर डिफरेंट, बट आई एम नाउ इन अ मच बेटर स्पेस बिकॉज नाउ आई नो व्हाट्स कमिंग इन, हाउ मच इज गोइंग आउट. So I'm not saying that my financial abundance has doubled, tripled, whatever, it's growing. But the difficulty that used to bother me, जो suffering होती थी पैसे नहीं होने की, अब वो suffering नहीं है. अब एक realization होता है कि हाँ okay, finances ये महीने के लिए कम है, so there's a practical way of looking at it. Right. So the suffering has gone. Correct. So can we apply this in every part of your life? Every part, Prashant. Absolutely. Like in relationships, let's say? Absolutely in relationship. That तो ये तो आपने मेरा favorite topic लिया है. Oh God. Absolutely. So, do you feel people fail in relationships because there is lack in something, like the way you were saying कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता है, या वो सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो उस बारे में, इनसिक्योरिटीज़ है, या जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं आप उसे सोचते हो कि ये तो निकल जाएगा, तो क्यों ये रिलेशनशिप रहेगा या नहीं, कब तक रहेगा. So that's why so many divorces are happening nowadays, and so many people are suffering from that. And because I have seen divorces are happening, but they are not happening on a very amicable way. You know, there is fight, there is disasters, and the whole period of divorce itself is very pathetic. Yeah. So ये भी ठीक से हो सकता है ना मेरे ख्याल से, अगर हाँ जी हो सकता है, लेकिन relationship एक अलग bag of experiences है. Divorce is a completely different topic. Okay. We'll come to that, but I'll start with relationship. कई लोग ये भी बोलते हैं कि relationship में आपको expectations नहीं होना चाहिए, okay? लेकिन हम सब humans हैं. They also say कि expectations होने की वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं उसमें, और relationships में होना नहीं चाहिए. ये कैसे possible है? Exactly, right? तो मेरा कहना, मेरे experience से ये है कि expectations तो हैं, मेरे खुद के थे, spouse से, marriage से, life से, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किए. That is where I failed. आपने क्या नहीं किया? I didn't express my expectations. तो ये एक्सप्रेस करना पड़ता है, right? I mean, if I'm expecting something from somebody, how is that person supposed to know what I want till I don't say it? Can I interrupt you? Please, yeah. जैसे हम प्रे करते हैं तो भगवान से या खुदा से हम लोग कुछ मांगते हैं, तभी तो भगवान को समझेगा कि आप क्या चाह रहे हो. लेकिन कई लोग बोलते नहीं ये समझ जाएगा. God knows everything. So why should I ask? Also, I should change my praying style from today onwards, because I also do that. I say, भगवान आपको तो पता है, आपको जो चाहिए करो मेरे लिए, मैं तो ready हूँ. I'm okay with it, whatever you do. But now, the way you are telling me, I should tell God what I'm looking for in life. Absolutely, it's there in the Bible as well, right? Ask and you shall receive. और हर एक किताब में, I'm sure in their own way, it is exactly that. Prayer का ritual क्यों है? Rituals बनाया गया so that people get into a practice of focusing to pray. Kausar, tell me. तो जब हम भगवान से या खुदा से पूछने के लिए, या तो सोच हमारी ये है that he knows everything, so he will give me whatever. And कभी थोड़े लोग ये भी बोलते हैं, he तो knows everything, but he's still not giving, so why should I pray to him?
वो भी एक एटीट्यूड आता है. इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और अ थॉट प्रोसेस विद गॉड ऑलमाइटी और द यूनिवर्स व्हाटएवर, तो इंसान के साथ तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ही माई स्पाउस और माई पार्टनर और माई फ्रेंड or my parents or my siblings should know. I have these expectations, but they should know me. If you know me, Prashant, if I tell you, you know me, you've known me for years, right? I mean, as an example, I'm saying. Yeah. Then how will you not know what I need? How would you? True. You know me as much as I let you know about me. हम ये नहीं सोचते अपने बारे में. अरे यहाँ तक आप ये सोचिए ना, आप खुद को कितना अच्छी तरह जानते हैं. दूसरा इंसान तो बाद में दूसरा आया, बाद में आया. Correct, correct. So first you should know what you are looking for. You should know, you should talk to yourself. Exactly. What are you looking in your life? Exactly. What is required in your life? And then you also express to your partner like what you're looking for. Absolutely. और तभी जाके ये relationship work होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप क्या चाह रहे हो लाइफ में. Yes. ओह, तो ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा. टोटली ना. और दूसरी चीज़, अगर ये स्पेशली लाइफ पार्टनर के बारे में है, तो ये तो मेरी क्या कहना चाहिए, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, जो भी बोलना चाहें, कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दैट वन पर्सन टू फुलफिल एवरीथिंग दैट यू वांट. आप वो इंसान को दोस्त भी बनाना चाह रहे हैं, आप उस इंसान को थेरेपिस्ट भी बनाना चाह रहे हैं, आप उस इंसान को लाइफ पार्टनर, यू नो, योर माई, क्या कहते हैं उसको, सोलमेट भी बनाना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी भी बनाना चाह रहे हैं. यार कितना डालोगे उसके कंधों पे. Correct. So every person who is there in your life has a different role. Yes. That's what you are trying to say. So somebody is your friend, so you look at him as a friend. Yeah. Somebody who's your lover, then obviously you look at him as your lover. Yeah. तो अलग अलग चीज़ों से, एक ही में सब कुछ, सारी चीज़ें नहीं आएगी. नहीं हो सकता ना, अच्छा नहीं है. हमारे घर में भी तो कमरे ज़्यादा होते हैं ना, ज़रूरतों के हिसाब से वैसे कमरे देखते हैं हम. True, true. तो इंसान भी तो घर की तरह ही है ना. Yes, true. So Kausar, this wisdom has come to you like an instant thing, or it was always there with you? कोई भी डिश भी इंस्टेंट नहीं बनती. So Instant नहीं है. so after going through life and Absolutely. experiences, Absolutely. you have come to this Yes. conclusion. Absolutely, absolutely. A lot of struggle, a lot of confusion, a lot of conflict inside me, a lot of denial. नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, या ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ. You know, सारे सवाल. Been through all of it, and it continues. ऐसा मैं कोई ऐसे enlightened stage में नहीं हूँ, but I'm definitely in a much more peaceful space, calmer. Reactions होते हैं, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के साथ. तो वैसा नहीं है कि अब मैं बहुत शांत हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम. बच्चे कहते हैं मेरे, मम्मा आपने आज रुद्राक्ष नहीं पहना है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, प्लीज़ पहले जाके अपना रुद्राक्ष पहन के आइए और ठंडे होइए, फिर हमारे साथ बात करिए. Okay. तो बट इट्स देयर वे ऑफ सेइंग, यू नो, गिविंग मी देयर फीडबैक कि आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, सोचिए इसके बारे में, राइट. एंड दैट आई टेक दैट, आई डोंट, यू नो, आई टेक दैट एज अ क्लू, एज अ हिंट. मैं पलट के ये नहीं कि सोचती कि बच्चे हैं तुम लोग, तुमको क्या मालूम है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. They're telling me I'm going through something, so I should take that. Na, okay, I actually tell them sorry. I'm sorry I just screamed at you without reason. I don't have to tell them something screaming at them, ना. कोई चीज़ से मैं नाराज़ हूँ तो वो मैसेज, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करती हूँ बच्चों पे, लेकिन गुस्सा करना and screaming is very different. Scream करने से क्या हो रहा है, एक तो वो लोग इरिटेट हो रहे हैं, या छोटे हैं तो डर जाते हैं, तो जो मैसेज में देना चाह रही हूँ वो सुन नहीं रहे. इट्स नॉट गोइंग थ्रू, और उनका पीस खत्म हो रहा है, राइट. एंड इट्स लाइक मम्मी को क्या हो गया. एंड वो तो आगे की बात है. अंदर मेरे गुस्सा इज एट अ बायोलॉजिकल लेवल, इट इज यू नो राइजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस अलग होते हैं, and then that affects your thought process, that affects your emotions. गुस्सा आप कितनी देर कैरी करते हैं अपने अंदर, उसके बाद कोई सामने अगर आ जाए तो वो तूफान उसके ऊपर निकलता है, and that person has no clue मैंने क्या किया.
करेक्ट करेक्ट मैंने क्या किया, अगर आगे वाला कोई हो जो हिम्मत हो, व्हाई यू स्क्रीमिंग एट मी, इफ इट्स अ स्पाउस लेट्स से, वहाँ अननेसेसरी लड़ाई हो गई, राइट. एंड हो चुका है मेरे साथ ये. ऑफिस का गुस्सा जो हुआ क्योंकि बॉस को नहीं बता सके, राइट, या कोलीग ने कुछ किया नहीं जो करना चाहिए था. आई वाज एट अ लीडरशिप लेवल, सो आई हैड टीम मेंबर्स हु वुडंट परफॉर्म एंड आई वुड कैरी दैट होम. गेट इरिटेटेड एट चिल्ड्रन, होमवर्क क्यों नहीं किया, मम्मा आज होमवर्क नहीं था, विदाउट आस्किंग देम, राइट. तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता था. Yeah, so these are So I things that have happened over and over again, Yes. till the time I started realizing exactly these things. Where is it coming from? मेरे अंदर क्या हो रहा है? Because वो irritation constantly carry करने से body में मेरा it started affecting my health to such an extent, acidity इतनी severe हुई, जो ignore किया, दवाइयाँ खा खा के ignore किया, 4 साल acidity को बर्दाश्त किया, ultimately gall bladder में stones हो गए, इमरजेंसी सर्जरी में जाना पड़ा. तो ये सब चीज़ें भी हुए. ओके, सो द मोस्ट ऑफ द फिजिकल पेन विच पीपल आर गोइंग थ्रू, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, लिवर प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बैक प्रॉब्लम्स हो गया, और स्पाइनल इंजरी हो गई, बैठे बैठे ही. सो दिस इज ऑल मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग. Yes, thinking एंड बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस. इट इज नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल. No, there is always. तो इन सभी का सोल्यूशन आता है हीलिंग पे. सो इफ यू हील योरसेल्फ थ्रू पीपल लाइक यू, सो अगर ये हीलिंग होता है तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन लाइफ. Yes, you at least get to the root cause, but sometimes, Prashant, you also have to keep in mind we as energy healers do not advocate that allopathy medicine is not good, या आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. अगर कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो प्लीज कंटिन्यू करिए, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स दोज मेडिसिनल एड्स, या उसमें जो विटामिन्स हैं, केमिकल्स हैं, इट नाउ योर बॉडी रिक्वायर्स दैट. लेकिन एट अ सेल्यूलर लेवल, एट एन एनर्जी लेवल, आपके जो चक्रास हैं, जो काफ़ी सारे और चीज़ें होते हैं, साइमल्टेनियसली वी आर हीलिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम देयर. करेक्ट. राइट. ओके, तो आपको पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आप हीलिंग करना चाहती हो? बिकॉज you are telling me you yourself was going through life and through anger and through everything, all kinds of emotion, और suddenly आपने एक incident था जब आपने decide किया कि no, now I have healed myself and now I need to, similar way I need to heal people also. ऐसा कोई सिंगल इंसिडेंट है? इन सिंगल इंसिडेंट तो नहीं बोल सकते, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगी. आपने जो कहा कि आई हैव हील्ड माई सेल्फ, नहीं कह सकते, आई कांट से दैट अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. ओके. मेरे लेट्स से फॉर एग्जांपल बचपन में आई हैड एक्सपीरियंस सेक्सुअल अब्यूज़ फॉर मैनी ईयर्स. ओके. और उसको मैंने, वो ख़त्म होने के बाद, एक्सपीरियंस ख़त्म होने के बाद, उस मेमोरी को मैंने ब्लॉक कर दिया था, बिकॉज इट वाज सो पेनफुल. I didn't talk about it to anybody. Till about 15 years later, I realized, way into my marriage, that I realized through coming across a course I was doing, which is psychology related, and उसमें निकल के आया कि मेरा ये experience, मेरे जो past का था, जो जब उस time पे 15-20 साल हो चुके थे उसको, मेरे आज को affect कर रहा है in my relationships. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इसका कुछ करना है. तब जाके मैंने वो पुरानी कहानी की किताब खोली और हीलिंग शुरू हुई. और इस बात को भी प्रशांत, वो हीलिंग शुरू हो के भी 12 साल हो गए हैं. मोस्ट ऑफ इट इज़ डन, बट कैन आई से आई एम कम्प्लीटली ओवर माई सेक्शुअल अब्यूज एक्सपीरियंस. आई एम टुडे इन अ प्लेस वेयर आई कैन टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, irrespective of gender, women or men, they go through it, right? Some, I mean, whoever have been through it, I can help them talk about it. I can help them by sharing my healing experience, and not just healing experience, my experience of having gone through it, right? क्योंकि जिन पे नहीं बीती है वो चीज़, वो नहीं समझ पाते what they've been through. But when I say, okay, you've been through it, so have I, वहाँ पे ऑलरेडी एक ताला अनलॉक होता है.
और फिर जब मैं कहती हूँ कि आई हैव gone through it and I am in a better space now, so if I can do it, so can you. And that is an invitation for the other person to also start their journey towards healing. तो आज भी कहीं कहीं आ जाता है मेरे को एक Okay. वो याद, Okay. you know, suddenly it will just come up. And a simple thing is I have to lock my door when I'm in the room. Even when I know I'm completely safe in the house, but I have to lock the door. Okay. So the past experiences of your life still haunts you, right? I wouldn't say haunt me, but कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने बना लिए हैं कि हाँ ठीक है, I trust you, but I still need to lock the door. That's it. I don't make a big deal out of it Okay. anymore, but it is how it is. तो लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स है, खुद में इनसिक्योरिटी है, तो उसे एक्सेप्ट भी कर लीजिए. आप उसे completely उससे रिकवर हो जाएंगे या you can live with it. I'm able to live with it. That's Exactly. such a wonderful thing. Otherwise, people are getting troubled with that or tormented because of that same thing. And they say नहीं ये निकलना ही चाहिए मेरे से. तो उसके लिए फाइट भी ना करें. नहीं. जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. तो ये वो खुद आप जितना उसको एक्सेप्ट कर लोगे वो इवेंचुअली कम होता जाएगा and then it kind of fades away on its own. But if I'm going to struggle that this has to go out, ये निकलना ही है, तो फोकस कहाँ जा रहा है आपका? अगर मुझे कोई चीज़ निकालना ही है तो मेरा फोकस एक्चुअली पड़ रहा है कि ये है मेरे अंदर. Whereas अगर ज़रा सा वो थॉट प्रोसेस को मैं चेंज करूँ कि मेरा ये ट्रॉमा कम हो रहा है, then the focus is on I'm getting better. Yeah. You can't be perfect. Full stop तो है नहीं. मेरे ख्याल से it's an ongoing process. वो तो चलते ही रहेगा. Yeah. तो जैसे the other day my daughter messaged me, Mama, I've got a headache. What do I do? I gave her whatever had to be done. आधे घंटे बाद में मैंने उसको ये नहीं पूछा बेटा आपका हेडेक कैसा है, मैंने उसको पूछा बेटा आपका हेडेक कम हो गया. So with that question, her focus is on whether it's reduced or not whether it is still there or not. Right. So Kausar, during the interview, I've been noticing the Rudraksh mala in your neck, and then Trishul in your wrist. So, born in a Muslim family, and then following this Rudraksh and that is Shivji. So, how it is possible and how it happened to you? Before I go into that, Prashant, I want to very quickly share a very funny experience I had one time. I was driving back home और पकड़ी गई मैं, पुलिस ने रोका, कुछ तो हुआ, and उस टाइम पे मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था. And before I could roll down the window, I was like, अरे यार ये पूछेगा अभी लाइसेंस के लिए and होने वाली है गड़बड़. तो निकाल के दिया. पहले तो उसको नमस्ते सर बोला मैंने, कि नाम देख लिया उसका, एंड नमस्ते बोला. हाँ. फिर ऐसे सर सॉरी एक्सपायर हो गया है. क्या मैडम ऐसे कैसे? तो उसके बाद नाम देखा मेरा, आपका नाम? मैं बोला हाँ कौसर सुल्ताना. और फिर मेरे यहाँ पे रुद्राक्ष को देखा, आप रुद्राक्ष पहने और आप ये ऐसे, हाँ है, हम सब मानते हैं. अरे क्या मैडम आपने तो बड़ा दिल खुश कर दिया, जल्दी से अपना लाइसेंस रिन्यू कराइए और ऐसे आगे मत करिए, जाइए ऐसे. So actually God saved you. Yeah, literally, no. Okay. So, but yeah, this happens to me very often. People see my name. I put security so many times. आप त्रिशूल पहने मैडम, गले में रुद्राक्ष है, लेकिन आपका नाम ये है. So, coming back to your question, Prashant, yes? My question is, doesn't it conflict with your ideologies? Yes, yes. I get exactly that. Yeah? Yes, it did. Initially, it did a lot. Well, if I may just go back to my childhood days, जहाँ पे obviously born in a Muslim family, सिखाया जाता है हम लोगों को, you know, हमारे जो prayer methods होते हैं, नमाज पढ़ना होता है, और रमज़ान में जैसे रोज़े रखते हैं, all of those things, right? I grew up with all of that. I would do it very regularly. But I'll tell you something. नमाज में जो हमको सूरे बोले जाते हैं, if I simplify it, these are verses from the Quran, okay, that you have to memorize and you have to say
in a certain way. If you've noticed Muslims when they pray, they're standing for some time, they're bending for some time, then they go down, सजदे में जाते हैं. तो हर वो अलग step पे एक अलग prayer होता है, right? Okay. And I struggled memorizing them. Okay, I chose the simplest ones, so it was easy for me to memorize. फिर भी कभी confuse हो जाती थी मैं, right? And उसमें मेरा डर ये हो जाता था कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, and my prayer will not be accepted, and God will be angry with me. और reverse effect हो जाएगा उसका. Reverse का तो बहुत ही दूर. God will be angry with me. Oh my God, fear. Okay, my fear. So yeah. the fear is setting in. So yeah. And okay. against God. Yeah. Against the Creator. And I'm praying to God with a fear that if I am saying it wrong, then it's not going to be accepted. And because of that, today when I look back, I realize I started making excuses not to pray. यानी मतलब करो ही नहीं, गलती भी नहीं हो और खुदा गुस्सा भी नहीं होगा. ये मेरा अपना खुद का बनाया, किसी ने बोला नहीं. Nobody told me this. अपने खुद बना लिया. Then there would be adults who would say कि अरे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बुरी बात है, right? So that was the first conflict within me itself about the religion. कि पढ़ो तो सही पढ़ो. My own thought process, गलत हो गया तो accept नहीं होगा. नहीं पढ़ूंगी तो भी he'll get angry. God will be angry that I'm not praying, and basically I'm not being a good person, right? Jump forward to introduction of Shiva in my life. Correct. Right. So here, without going into details, I came across a chant which I was listening to. I didn't even know it's called a chant. I didn't know किसका है. कहीं चल रहा था और I just started crying. So accidentally you heard Accidentally, completely. Oh. Okay. Right, without knowing, and I just started crying. And मुझे समझ नहीं आया कि ये सुन के रोना क्यों आ रहा है. I am very deeply connected to music, very very deeply. तो कोई गाने सुनकर आप usually होता है right कि उनके lyrics दे छू जाते हैं, so आंसू निकल जाते हैं, कुछ याद आ जाता है. But I have such reactions even listening to just music. Okay. Right, कुछ सुर हैं, कुछ राग हैं जो छू जाते हैं, and I tear up. ये मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि शायद ये जो चल रहा है इसका ट्यून की वजह से हुआ है. But I realized it was not just about the tune. So I did some Google research, Right. And उसके मायने निकाले, and I realized that this is a Hindu chant and it's about a Hindu god. And उस time पे I was still practicing Islam, whatever little that I could. Right. And there was one particular line in the meaning which really struck a chord for me. It says that I am everything, yet I am nothing. Okay. Lovely. Okay. So that is Shiva's, I think, statement. If Yes, I'm not wrong. absolutely. Shiva says this. Yes. Right. Right. हाँ. तो वो कुछ तो बहुत ज़बरदस्त मेरे अंदर हिलाया, प्रशांत. Right. Because in any religion, by that time I had come across, ये experience मेरा हुआ when I was nearing 40. So that's like a good, life led already experiences, शादी, बच्चे, सब काम बहुत अच्छा, like senior level and things like that, and meeting so many people with different kinds of religions, reading about those scriptures. तो जानकारी काफ़ी हो गई थी, right? More open-minded. Yet, in every religion, my personal takeaway, I'm not trying to point fingers, but my personal takeaway is that there are a lot of praising to God. There's nothing wrong in that, right? A lot of praising to God. Yeah, जो पूजा पाठ होता है, आरतियाँ होती है, वो सारी praise the Lord. Right? Praise the Lord. Yeah. The glory of the Almighty, the grandness, the beneficiary, the most kind, all so on and so forth, which is true. It's fine. क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान भी अगर उनकी तारीफ करोगे तो खुश हो जाते हैं. Right? Yet in this line, he says, "I am everything, yet I am nothing." Yes. वो एक ह्यूमन एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी बोलो उसको,
मैं हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ. Correct. राइट तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या किसको बाहर ढूंढ रहे हो आप? सब कुछ जो है वो Inside you, अंदर है. हाँ, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई टू फाइंड आउट. तो यस आई वेयर अ त्रिशूल, यस आई वेयर अ रुद्राक्ष, बट एम आई रिचुअलिस्टिक प्रेइंग ओनली टू शिवा? नो. Okay. डू आई डू पूजा पाठ? नो. बट डू आई ऑल्सो से माई नमाज? नो, आई डोंट. बिकॉज फॉर मी नाउ इफ आई एम टू सिट क्वाइटली एब्सोल्युटली इन साइलेंस, अब आप उसको मेडिटेशन बोलो या ऐसे ही जस्ट इन साइलेंस, ओके, एंड जस्ट फोकस ऑन अ नॉन डिस्क्रिप्टिव, कोई लेबल्स नहीं, बट एन एंटिटी, और फॉर मी, फॉर द लैक ऑफ एनी identification, I A just form? say universe. A form? Yeah, I Like just instead say of having the form, it's yeah. a formless thing. Formless, right? Universal energy कह देते हैं उसको. Right. Just total acceptance, surrender, all those things. कि है, कुछ है. Yes, do I say my Islamic prayers when I have to? कभी गाड़ी चलाते time पे I will say a prayer of protection. Do I do Shiv chant? Yes. Do I listen to Christian chants and music? Chants नहीं, उनको क्या कहते हैं? Hymns. Christmas में भी जो होते हैं. Yes, I do. Do I connect with all of them? Absolutely, I do. Okay. Every religion I feel is the same, but if I was going to follow only one, I was feeling very limited. तो मुझे उतना कनेक्ट नमाज पढ़ के नहीं होता है जितना सिर्फ अपने क्वाइट स्पेस में बैठ के कनेक्ट होता है विद द ऑलमाइटी. सो आई एम नॉट गेटिंग स्टक एंड लिमिटिंग माई सेल्फ इन कनेक्टिंग विद माई गॉड. सो कौसर, मैंने आपकी लाइफ से ये सीखा है कि आप बहुत ओपन रहे हैं लाइफ की तरफ. यू हैव रिसीव्ड एवरीथिंग वट एवर इज कमिंग योर वे विद ओपन हार्ट, ओपन आर्म्स, राइट? सो इफ वी स्टार्ट लिविंग लाइक दिस with very open heart, no rigidity, Yeah. no concrete structure around you, Yes. you will receive more from the universe. Because this is the way you are connecting with the universe power, and then universe wants to give you something, and here you are blocking. So you don't block. Let it come. Let it happen to you. Yeah. So that openness has to come with everyone, right? Yeah, yeah, absolutely. It's like having windows in a house. Correct. You leave them open for fresh air to come in, but if you don't want let's say insects to come in, आपने जाली लगाई है, फिल्टर लगाया है या पर्दा लगाया है, लेकिन हर बार तो बंद नहीं रखते ना, कभी खोल देते, कभी खिड़की भी बंद करते हैं. दैट इज़ इन योर कंट्रोल. सो इट्स इन योर कंट्रोल हाउ मच यू वांट टू रिसीव, व्हेन यू वांट टू रिसीव. You can choose that also, right? Another thing that you said is कोई structure नहीं रखो. I wouldn't say कोई structure नहीं रखो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी फॉर ह्यूमन बिहेवियर टू वर्क, अ लिटिल बिट ऑफ organization is required. You can organize your day, you can schedule your day, but structure constraint जो रखते हैं हम हमारे में, हमारी सोच को हम जो लिमिट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. करना है तो बस ऐसे ही करना है, वरना कुछ नहीं करना. That is limiting yourself. अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा है तो और कैसे करें? What can I change in me so that I react differently to a certain situation? I don't have control over the situation, but I have control over the way I react to the situation. But if I say no, if I put restriction on the way I react, and as it is situation पे हमारा control है नहीं, Correct. तो फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा? Correct, correct. How beautifully said. Yeah, beautiful. So what I have been experiencing through your talk is like one chant changed your life. I would say so, yeah. Right? One chant, a chant which you were unknown of. Yeah. You are not aware of this chant, and then you hear this chant, and the whole evolution process within you has happened. Yes. So that is you getting connected with Shiva. That's what I feel. Yes. Yeah, so that connection is so strong that I've heard stories. Is it true, like in your sessions when you are dealing with people and healing them?
So Shiva is doing his job through you, and you become like A channel. a channel, Yes. and he also talks through you. Is it true? Yes. So do you Yes. believe in this? I do, yes, of course. I live by it. Absolutely. Now, if you are a believer of Shiva, you will honor that. If you're not a believer of Shiva, I will not use the word Shiva. I will say it's a universal guidance. Why would I want to stop you from receiving something which is coming specially for you as a universal message, right? Just because you don't believe in Shiva. Right. ओके तो शिवा क्या है प्रशांत? शिवा एक अगर हम नाम हटा दें, सो इट इज़ एन एसेंस. सो इफ आई कैन ऑल्सो से एम आई कनेक्टेड टू शिवा? यस. एम आई कनेक्टेड टू हिज एसेंस? Absolutely yes. Which is the same essence which is there in every god, in every relation, which is there in the universal energy, right? So again, if I stick only to Shiva, then does that mean I don't believe in Hanumanji, or do I not believe in Jesus? या मुझसे अल्लाह का faith उड़ गया है? नहीं, मेरे लिए सब एक है. Okay, correct. So what I understand from this is, like, there are different gods with different energies or different shaktiya, Yeah. and different ताकत. Yes. वो सभी ताकतों की जरूरत है हमको. Yes. Right. So sometimes we'll need, let's say, Hanuman ji for shakti or for to get rid of a fear. Yeah. तभी हम लोग जब चैंट करते हैं, Yes. अगर तो हमारा फियर दूर हो जाता है. Yeah. सो हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं विजडम के लिए, ताकि हमें भी बुद्धि मिले. राइट, बुद्धि देवता के नाम से जाना जाता है. सो उसी तरीके से हमको शिवा से ये मिलता है कि इट्स इटर्नल लाइफ. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. इट्स इटर्नल एंड यू आर पार्ट ऑफ द होल क्रिएशन. Yes. And you are also creator yourself. Yes, aren't you? What I feel with Shiva is, he's a creator, we are his creation, and if we believe in ourselves, we are also creator. Then हमें भी वो शक्ति है कि हम लोग कुछ चीज़ें create कर सकते हैं. बिल्कुल है. Correct? बिल्कुल है शक्ति. तो ये शक्ति को ही तो जानना है, और अगर हमें अपनी शक्ति को जानना है तो हमें शिवा से कनेक्ट होना है. आप अपने डिविनिटी से कनेक्ट होइए, कोई भी रहे फिर वो. द डिविनिटी इज विद इन यू. Okay. योर डिवाइन रिसाइड्स इन यू. So is there a method to connect with your divinity? Faith. Absolute faith. Yes. That works for me. Faith not on the ritual per se. Faith not okay, not so much. I'll say that in a different way. Faith that a power exists, okay, and वो faith से जब मैं pray करती हूँ, that is a faith that yes, I am being taken care of. If I'm saying a prayer that I am not safe, please protect me, my prayer is out of fear. Right. But if I have faith that I know you will protect me, I know you always protect me, and my prayer is to continue to protect me, that prayer is out of faith. Correct. आपको फर्क समझ में आया? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. राइट. सो फिर आप वो फेथ से करिए. अगर आपको डर से दुआ करना है तो फिर फेथ कहाँ हुआ? फिर आप डाउट कर रहे हैं ना, होगा कि नहीं होगा. करेक्ट. तो मुझे एक विजुअल मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि एक छोटा बच्चा है जिसको फादर ने अपने गोद में लिया हुआ है, और फिर उसको मजे में वो फेंकता है ऊपर. एंड द चाइल्ड इज स्टिल स्क्रीमिंग विथ हैप्पीनेस बिकॉज ही नोज व्हेन आई एम गोइंग अप बट ही इज गोइंग टू होल्ड मी बैक. एब्सोल्युटली. दैट इज फेथ. यस. राइट. सो इस टाइप की फेथ हमें भगवान में भी चाहिए. Yes. कि अगर मैं मेरी कोशिश से सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं अगर गिरने लगूंगा तो आप संभाल लोगे मुझे. इस अंदाज से प्रेयर होनी चाहिए कि यस, यू आर देयर बिहाइंड मी एंड लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वांट टू लिव. या. विदाउट फियर. या, विदाउट फियर. और आपने जो कहा कि अगर मैं गिरूंगा तो आप मुझे संभालेंगे, ये नहीं, इट डजंट मीन दैट ही विल नॉट लेट मी फेल और फॉल. राइट. What I believe is, even if I do fail or fall, he will give me the strength to stand up and learn from the failure. Right. Learn from the failure. Learn from the failure is a very important line. Yeah. So if failure comes, a lot of people feel, oh, I have failed in life,
and now they go to some supportive things in life just to boost their confidence. They start drinking, they start gambling, they start doing different things, and they want to cover up their failure, and they want to blame on everything. जैसे मुझे कल ही किसी ने बताया कि the man started drinking just because one single incident happened in his life, and he got a reason to drink throughout his life, and he became a drunkard after that. And because of that, then a lot of things happen in his life which were out of control. So एक decision कि मैं ये हाँ fail हो गया हूँ, और इस वजह से मैंने अभी ड्रिंकिंग शुरू कर देता हूँ, बिकॉज नाउ आई डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, लेट्स से. तो ये रियलिटी से क्यों भागते रहते हैं हम लोग? रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? तो प्रशांत, मुझे एक एनालॉजी आ रही है ओके माइंड में इसके लिए कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक टायर पंक्चर हो गया, ओके नाउ या तो मैं वो कितनी देर में गाड़ी को पंचर टायर के साथ चलाऊंगी, एट सम पॉइंट आई विल हैव टू स्टॉप द कार. इन दैट मोमेंट आई हैव अ चॉइस, राइट, कि मैं उतर के खुद टायर बदलूं, जो बहुत मेहनत का काम है, या किसी को बुलाऊं उसको चेंज करने के लिए, इफ़ आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट उसमें भी मेहनत लगती है, या तो फिर उसके आगे गाड़ी वहीं छोड़ दो और इसके बाद डिसाइड कर लो कि आज के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, इट्स जस्ट टू मच ऑफ अ हेडेक, ओके, एंड उसके बाद मैं तकलीफ़ सहती जाऊंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फेलियर, दैट ये कैसी गाड़ी है, टायर पंचर हो गया. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब फेलियर होता है तो मुश्किलें ज़्यादा आती हैं, राइट, और वो मुश्किलों को अगर आप सामना नहीं करना चाह रहे फॉर वॉट एवर रीज़न, देयर कैन बी सेवरल रीजंस, बट हिम्मत लगती है मुश्किलों को सामना करने के लिए. और अगर उस मोमेंट में अगर आपकी हिम्मत टूट जाए और अगर आपने डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू फेस दिस अगेन, आई विल फाइंड सेवरल वेज टू गेट आउट ऑफ इट, सो आई डोंट फेस इट. लेकिन वो सेवरल रास्ते जो हम चुनते हैं आसान लगते हैं क्योंकि आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे वापस, या उस सिचुएशन में नहीं जा रहे, या वो जो आप अचीव करना चाह रहे थे गोल वहाँ नहीं जा रहे, तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं. लेकिन यू नॉट ऑन योर पाथ. अब वो गाड़ी छोड़ दी मैंने वहाँ पे, जहाँ मुझे जाना था अब मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि ना मैं चल के जा सकती हूँ ना ऑटो जाएगा वहाँ पे. वो वहाँ जाने का रास्ता गाड़ी से ही था. आई कम्प्लीटली चेंज माई प्लान, जाना छोड़ दो, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे अब. आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक देयर एवर अगेन. बट दैट आई वॉज सपोज टू गेट समथिंग बिग इफ आई वेंट देयर, राइट, बट आई डिसाइडेड नॉट टू. तो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट. ठीक है, आई विल सक्सीड देयर ऑल्सो, लेकिन एक ज़िंदगी भर खटकता रह जाएगा कि अगर मैं वहाँ जाती तो क्या मिलता, व्हाट हैव आई मिस्ड. वो जो खटक रहती है ना, वो रह जाती है फिर लाइफ लॉन्ग. बिकॉज आई डिडंट चूज टू फेस द डिफिकल्टी इन दैट टाइम. Right. So what you choose at that point is very important in life. I think that's what makes your destiny. Yes, every moment you have choice. आपको हमेशा एक चांस या एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है. एक नहीं प्रशांत, यही है, यही बात पे हम एक्चुअली अटक जाते हैं, राइट. ये थॉट प्रोसेस कि हमें एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है. यूनिवर्स हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, करेक्ट, बट हम सोचते हैं कि मिलना है तो यहीं से मिलना है. वो कहते हैं ना, इफ वो व्हाट्स दैट प्रोवर्ब, इफ वन डोर क्लोजेज मेनी अदर्स ओपन अप, राइट. बट अगर हम सोच के रखें कि नहीं मुझे यही दरवाजे से चाहिए, ऐसे ही चाहिए, करेक्ट, राइट, और ये ही चाबी से मैं खोलूंगी, तो बैठे रहो. Correct. Okay, you also call yourself a sacred numerologist. Sacred symbologist. Symbologist. Sacred symbologist, right? So what does that mean and how does it work? Okay, so sacred symbology actually is there in science for many years. Okay, sacred geometry से भी माना जाता है वो, you know, and
lot of people have done a lot of research on it. There is a math to it, there is a physics to it, there is science behind it, and of course there is spirituality in it. Okay, so I'm not going to that. So all combined together. Yeah. That's what you're saying. So sacred symbology है. Okay, जैसे आपके पास कोई क्या कहते हैं उसको, यंत्र, जैसे हिंदू उसमें यंत्रास हैं, राइट, या कोई डिज़ाइन है आपके पास जो आप उसको डिवाइन मानते हैं, आपको दिया गया है, आपके गुरु ने दिया है, या कोई, दैट इज सेक्रेड सिम्बोलॉजी, राइट, या कोई तस्वीरें हैं, जैसे एक इजिप्शियन बिलीफ है दैट द इविल आई प्रोटेक्शन, Right. दैट्स अ सेक्रेड सिंबल, Okay. right? There are people who write certain prayers in a certain design, या फूल बनाकर, या numbers में, right? It's a prayer, that is a sacred symbol, right? So sacred symbology is there in many religions in many ways. What I do as sacred symbology is a gift that I have received in the last couple of years, and why I call it a gift is because it is not something that I've learned or certified in. Okay, in one of my meditations, and over a period of different meditations, it was I received this, that every human is a soul, right? And that soul has a vibration. It's an energy field, right? So it's vibrating. उसका एक अपना, जैसे let's say for example जन्म पत्री बनाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, या आपके बर्थ नंबर पे जो चार्ट्स बनते हैं, मून के, प्लैनेट के, वो सब जैसे चार्ट्स बनते हैं, राइट? इन अ सिमिलर मैनर एवरी सोल हैज़ अ ब्लूप्रिंट, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है, Right. आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, इट्स ओनली योर्स, राइट? Nobody has that same fingerprint. Similarly, your soul has a blueprint. Okay? तो उस blueprint का vibration, when I sit in meditation, if I am to draw a symbol for you, Correct. okay, I will tap into your soul's energy, and I am guided to draw a geometrical design. Okay? Like this symbol is my soul symbol. Okay. Okay, I received this. So the guidance comes in you know, I actually use a geometry box, and I'm वो मैं जो बोलते हैं ना, मैं नहीं exist करती in that moment when I'm sitting in that space. I'm just guided, draw a line, draw a circle, draw whatever, right? जो भी measurements है, I just do it and a symbol is given, right? Now if I give that symbol to you, so that is like a key for you. Okay, wherever you are facing blocks in your life. Now, I have almost now 10 different symbols. It's there on my website. I don't remember all of them, but the most common ones people are using is, one is health enhancement, another one is relationship enhancement. Okay, another one is finding your match, your partner. Another one is business abundance. ये चार बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है. Another one is focus enhancement. ये बहुत कॉमन है symbols. Okay, यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत फ़ायदा हो रहा है उनको. Like focus enhancement, for example, there are people who find it difficult to focus. True. Okay, so when I sit for that person, I get guided to draw the symbol. Now, what does the person do with the symbol? Wherever your workstation is, या आपका study table है, बच्चे भी use कर रहे हैं, जो study में focus नहीं कर पा रहे, and it is just to be kept at your table. और जब आप realize कर रहे हैं कि आप distract हो रहे हैं, you have to just spend a few moments looking at that symbol. Okay. Now, the interesting part is कि there are a lot of people who find it intriguing, but they also say, ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक सिंबल को बस देखो और सब ठीक हो जाएगा, या बिजनेस अबंडेंस में ये ऐसे कैसे, बस सिंबल हमारा टेबल पे रखो और हमारा बिजनेस चलने लगेगा, अच्छा हो जाएगा, ब्लॉक्स निकल जाएंगे. जैसे हाँ, सवाल आपका बिल्कुल सही है, सवाल बिल्कुल सही है कि खाली एक ऐसे कोई लाइन वाइन बनी हुई है, ट्रायंगल सर्कल बना हुआ है, उसको मैं देखूं और सब ठीक हो जाएगा. लेकिन हो रहा ये है ना प्रशांत, दैट
people have also become used to struggling and a longer way to come out of struggling. Okay? मतलब आप बहुत मेहनत करिए तभी आपको सफलता मिलेगी. क्या कहते हैं उसको? नो पेन नो गेन. दैट्स द वन. सो देयर इज दैट प्रॉवर्ब, नो पेन नो गेन. ओके, वो इतना लोग बिलीव करते हैं कि जब तक आप तकलीफ नहीं सहेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कह रही प्रशांत दैट मेहनत नहीं करना चाहिए, दैट यू शुडंट work hard. That's not the point, right? But there is a difference in working hard, like, you know, really just putting a lot of energy in doing productive work versus a burnout कि बस करते जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे, but you know लगे हैं उसमें. Okay? तो ये इसमें फ़र्क है. That is number one. That you don't get anything till you don't struggle. Right. There's a difference in that, and working hard, working productively, there is difference. Okay? Having said that, the universe is reaching a point where it is now offering people, okay, a choice that you want more. Okay, I'm giving you choices. You can continue going the way you are, which is fine. You are succeeding, you are getting what you want, but I'm also giving you a button, or I'm also giving you a choice. Okay, ease. What do you want to choose? आपको जो चाहिए आपको मिलेगा और आसानी से मिलेगा. Okay, अब वो आपकी choice है, right? तो the sacred symbol is like that. You want to continue struggling, please go ahead. You want to get over your struggles faster, get a symbol. Okay, there are so many examples I can give you. वो जो हम दरवाज़ों की बात कर रहे थे. ओके, आपके पास बहुत सारे दरवाजे हैं, आपके पास बहुत सारे चाबियों का गुच्छा भी है. You just don't know which key fits which door, but you're very content because you have all the keys, and you don't mind spending as much time and energy and effort to keep trying all the keys in each door. कौन सा वाला खुलता है, क्या होता है, ये वो एक choice है. Or you have a remote control. One remote control that can open 3 different doors. True. Okay, now you could sit with that saying ke I don't know, I can't believe in this remote, क्या पता नहीं कौन सा दरवाज़ा खुल जाए, नहीं मैं ही अपनी चाबी ढूंढ के मैं ही अपने चॉइस का दरवाज़ा खोलूंगी, मुझे वैसे ही ठीक है. कोई बात नहीं, करो ना आप, no problem. There are some who are adventurous. Hey, I like this idea, यार remote control से चलो खोल के देखते हैं, मज़ा आएगा. And they are willing to do that. So the universe is giving you a choice. Everywhere the universe is giving you a choice. You go to malls, there is a choice of escalators and staircase. So everything is in your hand. What you choose and what do you choose, yeah. What you choose, right? So 2 symbols which are coming to my mind is sacred symbols. Yeah. Very popular ones is one is swastik and the other one is Om. Yes. Right? Yeah. So I think these 2 symbols are very universally known. Yeah. And you are talking about symbols for your individual now. Yes. Yes. So this is a universal thing and this is on an individual level. So for my soul, I will require a different kind of symbol. Yes. And somebody else would require a completely different symbol. Absolutely. How beautiful is that? Yeah, absolutely. Wow. Kausar, it was such a fantastic meeting you and getting to know all the, wonderful things which I wouldn't have explored otherwise. And through this interview, I have reached to so many conclusion levels just through the talk, which is so important. Conclusions नहीं. Conclusions नहीं बोलेंगे उसे? Conclusion कैसे? मतलब आपने अगर sorry, I'm यहाँ पे भी सीख दे रही हूँ, but just want to end it with this, that the moment you put a conclusion, you are stopping from learning more. Right. So this or is experiencing more. Perfect. So these are your closing lines. So guys, so with these closing lines of don't make conclusions in life, just keep on experiencing it, be open to all the experiences, and then you will reach at a point where you will come to know one day why you are here. What if you don't want to get that answer? फिर मजा ही क्या रहा जिंदगी में? Correct. So we all are looking for these answers, right? Yeah. Yes. So find out your answer and be connected. Kausar, thank you so much. Thank you, Prashant. I absolutely enjoyed this conversation between us. बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करती हूँ कि आपके देखने वालों को, सुनने वालों को
यू नो देयर सम इंस्पिरेशन, सम गाइडेंस, सम होप, सम लाइट. उम्मीद हमेशा कायम रखिए. सबके लिए मेरी ये दुआ है. आदाब.